Hello dear students, good morning to one and all. Welcome back to the chemistry class. As we have completed two topics from class 12th, solution and electrochemistry. The one more important topic from physical chemistry branch is chemical kinetics. So in today's session, we are going to start the next topic, that is chemical kinetics, unit number 4 from class 12th. Dear students, already you have studied thermodynamics and equilibrium in class 11th. So where we have studied about feasibility of a reaction and to what extent a reaction can be proceeds. Am I right? Thermodynamics deals with feasibility of a reaction. What it means? Whether the given reaction is possible under the certain given conditions or not. Feasibility, possibility. Whether the given reaction is possible in some particular direction under the given conditions or not. We can predict from the thermodynamics concept. And from the equilibrium topic, what we can get the inference or what we can conclude from the equilibrium topic is, if a reaction is proceeding, to what extent the reaction proceeds. Whether the reaction going to complete 100% or 90%, 80%, etc. That means to what extent the reaction is going to complete. Extent of reaction can be predicted from equilibrium topic. But the rate, the speed, the velocity, what we can call it, the velocity of a reaction, speed of a reaction, at what speed, at what rate, at what velocity, all the terms are same. At what rate the reaction is continuing in the forward directions, forward and backward. At what rate the reaction is carrying. So, to study about the rate of a reaction, a special branch, physical chemistry branch, under the heading of chemical kinetics, we are going to deal. This chemical kinetics is also known as reaction rate kinetics, because it particularly deals with a rate of a reaction, mechanisms by which the reaction is occurs, and some factors which influencing on the rate. So, dear students, before starting the syllabus, please note the objective points as snapshots. So that is kind. What are the concepts we are going to cover in this topic? So in the first lecture, first point, whenever we will start a new topic, of course, I am going to discuss about few introduction about the topic, introduction, a few points, introduction to the topic, and then here mainly it deals with a rate of a reaction. Rate of a reaction, rate of reaction, rate of reaction. That means at what rate the reaction is going. Reaction, rate of reaction. Its types, rate of reaction, rate of a reaction, rate of a reaction. It is of two types. One is average rate of reaction, average, and instantaneous rate, average rate and instantaneous rate, and calculations we are going to deal along with its graphical representation. What is meant by the average rate of reaction, what is meant by instantaneous rate of reactions, how we are going to predict by graphical representation, etc. Rate of reaction, average rate, and then differential rate equation. Differential rate equation. Look at this, differential rate equation. Differential rate equation and related numericals. Related problems. So ये जो differential rate equation है, इसका related problems. Differential rate equation and some related problems we are going to deal. After the differential rate equation,
factors affecting the reaction rate. Look at this. In this case, so starting में क्या है? Introduction. Rate of a reaction, just basic definitions आते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं. Rate of reaction में instantaneous rate and instantaneous rate के बाद में average rate of reaction. उसमें by using graphical representation how we are going to calculate instantaneous as well as average rate of reaction. उसके बारे में स्टडी करना है. And after this, factors affecting the rate of reaction. बहुत easy concept है. Factors affecting the rate of reaction. What are the factors which influencing the rate of reaction? एक reaction का speed vary करना है, तो what are the factors which affecting the rate of reaction? Factors affecting the rate of reaction. So after this point, the next is concentration dependent rate. Under this setting, concentration dependent rate. Under this setting, law of mass action. इसके बारे में क्लास 11th यूनिट नंबर 7 इक्विलिब्रियम में हम स्टडी किया है. लॉ ऑफ mass action. According to the law of mass action, rate is directly proportional to concentrations. वहां पर आपको एक constant मिलेगा. That constant is known as rate constant. Rate constant आता है आपको. Rate constant represented by K. इसका characteristic properties, rate constant and its characteristic properties. After that, differences between rate of a reaction and rate constant. इन दोनों का difference क्या है? Rate constant. Rate of reaction and a rate constant. What are the difference between these two? Concentration dependent. So soon after this we are going to deal about a rate law expression. Rate law expressions. So based upon this rate law expression, we are going to define order of reaction. In this case, order of reaction means zero order, first order, second order, third order, fractional order. Definition with few examples we are going to deal. And then molecularity of a reaction. And in दोनों का difference between order and molecularity. Differences between order and molecularity of a reaction. Differences between order and molecularity of a reaction. Difference between order and molecularity of a reaction. Difference between order and molecularity of a reaction. This is थोड़ा basics है यहाँ तक. Next, the next concept mathematical part में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है. Integrated rate equations. Integrated rate equations. यहाँ पर integrated rate equations में आपको particularly zero order reaction and first order reactions are given in NCERT, but objective के लिए हमको nth order reaction का भी चाहिए. First order, second order and nth order reaction. General formula, final formula we required in order to solve the numericals. Integrated rate equations. उसके बाद में half life period. इसके बारे में आपको फिजिक्स में भी है. Half life period. Same for zero and first order reaction. Zero and first order reaction as per NCERT. Apart from that, nth order तक आपको चाहिए. Nth order. Half life period for zero order and nth order. इसके बाद में experimental determination of order of reaction. Experimental determination of order of reaction.
सो ये जो पार्ट है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपका एनसीईआरटी बुक में 2 to 3 प्रॉब्लम्स दे हैव गिवन। यहाँ पर डिफरेंट मेथड है, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनिशियल रेट मेथड, इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड। सो डिफरेंट मेथड से हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो ये एक ही इंपॉर्टेंट है, विल वन मोर टाइम्स विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन द नेक्स्ट theoretical concept है collision theory। collision theory तो यहां पर एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर्स बोल के कॉन्सेप्ट है। एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जस्ट कुछ theoretical concept है यहां पर। how the rate of reaction increases when concentration varies, तो उसके बारे में कोलिजन थ्योरी कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल है थोड़ा यहाँ पर। ओरिएंटेशन एंड एनर्जी बैरियर इन दिस केस। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट में टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक डेफिनेशन आता है यहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एंड आफ्टर दैट उसका थोड़ा 1 or 2 प्रॉब्लम्स टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट में। नेक्स्ट आफ्टर दिस few more concepts are there. One is Arrhenius equation and concept of activation energy or energy of activation. Concept of activation energy. Concept of activation energy and its collision theory. How we are going transition theory, based upon transition theory we can explain activation energy. कुछ related concept है वहां पर। After this activation energy, next some important concept है यहाँ पर calculations of activation energy के बारे में स्टडी करना है। EA means activation energy of activation. And finally one simple concept, effect of catalyst on rate of a reaction. How a catalyst alter the rate of a reaction, how it changes the speed. So these are the contents that we are going to cover in this topic. Look at this, have a look one more time. In the starting part, introduction, rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिक डेफिनेशन हमको यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट। बेसिक डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका कांसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस टाइप से डायरेक्ट इसके रिलेटेड उतना ज्यादा ध्यान, उतना इंपॉर्टेंस नहीं लगता मुझे, बट जस्ट कांसेप्ट है यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन अगर आपको पता है, at the particular given time at some interval of time, एवरेज लेते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या है, जस्ट एक डेफिनेशन आते हैं आपको यहाँ पर। ये होने के बाद में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा यहाँ। डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, ओके, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड द प्रॉब्लम्स ऑन दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्योंकि ये जो कांसेप्ट है विदाउट सिंपल लेवल है, 0 लेवल क्वेश्चंस डायरेक्ट इक्वेशंस वहां पर रहते हैं। वन डाटा विल बी गिवन, यू नीड टू कैलकुलेट वन मोर between 2, A gives rise to B or R gives rise to P, reactant to the product. एक का वैल्यूज देते उन्होंने, so दूसरे का वैल्यूज you need to find out. So this is a differential rate equation and related problems। ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग से। लेकिन ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, आसान है, इजीली यू कैन सॉल्व, नॉट ए प्रॉब्लम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, थियोरेटिकल बेस्ड, जस्ट एक 5 to 6 पॉइंट्स, जस्ट हेडिंग नोट किया तो भी चलेगा आपको, क्योंकि concept oriented you can explain on your own directly। factors affecting on the rate, in this part concentration dependent rate जो है, concentration dependent rate law of mass action का concept है। based upon the law of mass action, when we are applying the law of mass action to a particular reaction, we'll get a constant during that
एक्सप्रेशन। वो जो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट बोलते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है स्टडी करना है हमको। बाद में रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट का डिफरेंस क्या है जस्ट नोट करना है हमको। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन दिस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दिस ऑर्डर समवेयर आई हैव रिटन, ओके दिस इज द कांसेप्ट, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर 5 मेथड है आपको, 5 मेथड्स। सो ऑल द 5 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको। एंड यहाँ पर जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करें फॉर ए गिवन रिएक्शन, दैट रिएक्शन इक्वेशन जो है दैट मस्ट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन रहना चाहिए। नॉर्मल रेट इक्वेशन से नहीं आते आपको, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी सिंपल है, डिफरेंस भी सिंपल है, थियोरेटिकल पॉइंट है यहाँ पर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड, ये दो कॉन्सेप्ट आया। अगेन put a 5 star mark on this important concept। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। आज जनरल फॉर्मूला लिखेंगे हम nth ऑर्डर में। कुछ डिराइवेशन भी दिया है, थ्योरी के लिए डिराइवेशन पूछ सकते हैं आपको, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव में तो न्यूमेरिकल्स है, इसके ऊपर रहते हैं। यहाँ पर ग्राफ का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इवन इन गैस फेज आल्सो, इन गैसेस फेज में कैसा रिएक्शंस होते हैं वो भी हमको स्टडी करना है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस थोड़ा पूछते हैं आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक में ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं आपको। एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन हो गया, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, नोट कीजिए यहाँ पर भी। कोलिशन थ्योरी कांसेप्ट ओरिएंटेड है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट एक डेफिनेशन है यहाँ पर, और सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं इसके ऊपर सिंपल प्रॉब्लम्स रहते हैं, सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं यहाँ पर। अरेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो कांसेप्ट है यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी 3 डिजिट किलो जूल्स पर मोल, ऐसा मींस वैल्यूज फॉर न्यूमरिकल कैलकुलेशन पार्ट है ये भी। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एक सिंपल कांसेप्ट है, जस्ट कांसेप्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसके ऊपर प्रॉब्लम, दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बोले तो फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए उतना मेथड्स है वहां पर। सेकंड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। एंड थर्ड कांसेप्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हाफ लाइफ। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट पे बहुत कम है प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट अरेनियस इक्वेशन, फिफ्थ प्रॉब्लम, 5 टाइप्स, मींस ये कांसेप्ट के ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल आपको ज्यादा रहता है। नोट दिस स्नैपशॉट, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक। रेगुलर क्लास में स्टार्ट करेंगे, अब नोट कीजिए स्नैपशॉट। थैंक यू।